Hmm. So hey guys. I hope my voice is clear, loud and clear. Let me just check if everything's working on it. Is my channel group. Oh. हमने तो बोलिए भी था ना 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 हमने तो बोलिए भी था वरना कंवारी मर जाऊंगी वरना कंवारी मर जाऊंगी तुझको वफन मनाऊंगा वरना कंवारा मर जाऊंगा दुल्हन बनाऊंगा कंवारा मर जाऊंगा मैं दीदी तुझको भी बफल बनाऊंगा I hope I'm loud and clear. Let me just check if everything's working or not. Not by this, but by looking at the live stream. If the live stream is working or not. So, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो रहते हो Am I clear? Am I clear? Am I clear? Am I loud and clear? Am I clear? Am I clear? Am I loud and clear? Am I clear? Am I clear? Yes. And let me check the quality as well. Yeah. Quality is also clear. So no issue on that. I think we can start. I think we can start.
Okay. Maybe because hmm. Okay. So today we'll be solving this question, maximum subvariance, right? And it's a medium level questions. I already solved this, right? And we'll try solving now as well. Hmm. So it is kind of a revision, right? So which is I am doing currently. So the question says given an array integers. Okay, so before going to the questions, I would like to say one thing, and that is if we'll try solving this question in multiple ways, right? From brute force to the optimal one, right? So that we can definitely crack the interview in a very efficient manner because if you solve the questions from the brute force to the optimal one, it shows to the interviewer that you really thinking about the question, right? In every and every aspect. So this thing has a very good and uh, very advantage of doing same questions in multiple ways, especially brute force to optimal one, right? And yeah, so let's go to the question. The question says maximum subarray. Given an integer array nums, okay, find the subarray with a large sum. Okay, it is asking me to find the subarray with the largest sum and return its sum. Okay, so array is this, right? 2 is there, 1 is there, minus 3, 4, and so on. And if you see what will be the subarray having maximum sum, right? So let's do it manually, right? Let's do it manually without any coding and all. So minus 2 1, if I plus, it becomes minus 1, and then minus 4, right? And then it becomes 0. Hmm. Okay, it becomes 0. So 4 minus 1 is minus 3, minus 3 plus 2 is 5, and then 6, right? 6. If I do minus 5 as well, so it becomes 1, right? And then 4 plus 1 5. So I can see over here, so this is the maximum subarray I can find over here, right? And that is the output only. See, 4 minus 1 2 and 1. Okay, so when the constraint says that nums dot length nums dot length, right? Nums dot length will be from 1 to the 10 to the power 5, which means there will always be an element, and the element could be negative, right? This is how we basically this is how exactly we try to access the element, right? So this thing particle says the element, so the element could be in negative and in positive as well. And it says if you have figured out the big of one solution, try coding another solution using divide and conquer approach, which is more subtle. Okay, divide and conquer. Divide and conquer is something like merge sort. Merge plus bind is something like that. So let's say what are the topics it says. Okay, so I have not done the dynamic programming. Currently I'm doing maybe what I'm doing stack, queue, and a little bit of tree.
So I do not I haven't reached till the dynamic programming, but yeah, divide and conquer array. I'll try solving this as well, but no worries. Okay, and okay, the first solution which is coming in my mind. This is an array, subarray, right? And then this is also an subarray. This is also an subarray, right? This is also an subarray. This is also an subarray, and so on. Now again, this is also an subarray. This is also subarray. This is also subarray. Oops. This is also subarray. Then this is also. Then this is also. Then this is also. Right. So what we'll try to do is I'll find out the sum. What I'll do is I'll calculate the sum of these two. Okay. And there might be a variable which will compare the sum versus maximum sum, right? So yeah, right. So what I'll do, I'll just do a sum of these. Is the sum of these is greater than the maximum sum, which we will calculate definitely, or not? Something like this we will try to do, right? Hope you understood. Hope you understood. Okay, so let's try coding now. Okay, so one thing I just want to say something, that because I am doing a brute force approach, which means it is going to be the big O of n square time complexity, right? And I have a one table, right, which will basically help me to identify if the ID will give the time limit exceeds or not. So it's a DSA trick. Okay. So it is says if it is a time big O of n square, right? If your solution is big O of n square, which means the length, and means the size of the input, right? So length of the array should be greater than or equal to 10 to the power 3. And if you see the question over here, it says the length of the array is 1 to the 10 to the power 5. So I guess whatever I'll do the solution might give the TLE, I mean time limit exceeds. So no worries on that. Let's try. We'll definitely improve this. Max sum. Initially, I cannot keep this you know 0, because it says the element is could be in negative as well. If I will keep this 0 and this sum comes in minus, right, I'll not be able to compare this. Okay, so electricity went, and I hope you are able to see me. If not, that's okay. We'll definitely improve this. And I am not able to see my keyboard as well, but no worries. And so for that I have to keep this infinity. Okay, so that maximum okay, wait. I cannot keep the infinity in negative, right? Because if I will maximum sum, so I can I am definitely sure, I'm 100% sure that I cannot keep the no, so I'm 100% sure that I cannot keep the maximum sum to 0. But I'm thinking that what should I keep this here? It should be minus infinity, because if I will keep the minus infinity, then when I try to compare, right? Yes. No worries on that. Okay, so we basically need to find the maximum so far, so it doesn't matter. Okay, yeah, I got it. So let's let I is equals to 0, and I is less than nums dot length, right, I plus plus, right, and I'll say let you start from the I,
and j is less than nums dot length and j plus plus, right? Now what I'll do is I have to let sum is equals to 0. What I'll do is I'll try sum is equals to array of, you need to find it. Okay. Right. And also I'll basically compare as well. Max, that which subarray is greater than which subarray is greater than, right? So max dot max sum which is greater than sum or the calculated maximum, right? If I try returning it max sum, okay, so if I get the TLA, which means my input is, I mean my code is correct. Oh yeah, definitely. Okay, so on the running I might not get the TLE. Ah, come on, why the hell I am doing silly things? And I hope I have done. Okay, return. Nums, bro. Actually, I have a habit of using array in my code. I mean, I always try to use array because that mm, seems familiar. So yeah, uh, code is correct. It has passed 3 test cases, but now if I get it TLE, right, which means okay. Oh yeah, I got the TLE, which means I need to solve this question. I mean, the it will not work, right? Although the output is definitely and 100% correct, right? 100% time correct, time, yeah, whatever it is. But let's see. Basically, we found the one solution, right? And because it is giving me TLE, right, which means time limit exceeds. And because of this, this I found somewhere, and to found this, I really did a lot of research. So no worries on that. Okay. Hmm. Yeah. So we found the one solution. Let's see if I can find any other approaches. I think there is a one solution, and that is Kadane's algorithm. Kadane's algorithm. Yes, yes. I guess I can do this question using Kadane's algorithm. Right. So let's understand what is Kadane's algorithm first, right? Do you know? Okay. So let me just do my code, and then we'll give and then we will try to understand Kadane's algorithm, right? So yeah. Hmm. Kadane's algorithm. Kadane's algorithm. Kadane's algorithm. Hmm. Okay, so Kadane's algorithm says that let sum is equals to 0 for let I is equals to 0, I is less than nums dot length I plus plus I plus plus. Now it says if sum is equals to 0, right? If the sum is equals to no sum is equals to 0. Okay, it is a little weird. I think it should be less than 0. Yeah, less than 0.
right? And to calculate sum, I think, yeah, and to calculate sum, what I have to do is sum plus equals to nums of I. Okay. Now what I have to do is I am calculating sum. Sum, it is 0, it is 0, right? I will if sum is greater than max sum, right? So what I'll do is max sum is equals to sum, right? And for that I have to define here, right? Let's say maybe infinity. That also, I mean, that really works well, right? Because the maximum sum could be in minus one. I mean, could be negative, right? And I think I have done everything. This is what Kadan's algorithm is basically. Okay, so what we try to basically is if let's say I am doing a sum of this. The sum of this gives me one, right? 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 And then minus 3. 1 plus minus 3 goes below 0. So do you think is there any necessary to go below 0? No, right? I mean, why I would go below 0? I mean, I don't think so that this sum is going to be, I mean, the minus thing will help me anyway, right? I think, yeah. So yeah, I think this should be working. Okay, so it is not working. What is wrong? Undefined? Oh yeah. I didn't return, so I had to max from. Okay, so it is working. Now let's see. No worries on it. So it's a Kadance algorithm, right? We will give this code to the chat GPT. Hello, bro. I need your help. Um, understanding Kadance, Kadance algorithm. I do understand this, but I'm not able to, make you understand. So let's understand. तेरा डाउट क्लियर करने का ठीक है जी, मेरे को फालतू की बात नहीं चाहिए. कंटिन्यूस सब एरे का पार्ट है, ठीक है. जब तक प्रीफिक्स, हाँ देखो मैंने भी वही बात बोली थी कि भाई जब तक प्रीफिक्स का सम पॉजिटिव होता है तब तक कैरी करो. हाँ मतलब तब तक आगे लेके जाना है. जैसे ही नेगेटिव हो जाए छोड़ दो. दिस इज व्हाट आई हैव डन, राइट? If the sum is less than 0, which means it is a negative, uh, you know make it sum to the 0 again, right? हम करंट सम को मेंटेन करते हैं और अगर नेगेटिव हो जाए तो रीसेट कर देते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव डन. साथ ही एक मैक्सिमम सबको ट्रैक करते हैं जो अब तक का मैक्स है. ठीक है, आई हैव नॉट यूज द मैथ डॉट बैंक मैक्स, बट या दिस इज द एग्जैक्ट this is exactly what I have done. So this is what Kadans algorithm, right? Can you just
explain this. Explain this in. Uh, Actually, can you just explain the intuition part? Intuition part. सिर्फ इंट्यूशन समझ ले, फिर कोड और ड्राई रन तू खुद का बना लेगा। और ड्राई रन तो मैंने कर लिया है। अगर तेरा करंट सम पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो उसमें नेक्स्ट एलिमेंट जोड़ दे, जोड़ के देख ले, हो सकता है कुछ और बड़ा मिल जाए। ठीक बात है। पर अगर तेरा करंट सम नेगेटिव हो गया है, तो उसमें कुछ भी जोड़ बेकार ही होगा। हाँ, ये भी बात है। राइट, आई मीन इसीलिए हमने उसको मतलब हमने ये मेंटेन किया है कि भैया जो सम है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम्म, you can really think like this. पॉजिटिव सम मीन्स अब तक का जर्नी यूजफुल था, कंटिन्यू करो। हम्म, नेगेटिव सम मीन्स ये रास्ता बेकार था, नई सवेरे यहीं से स्टार्ट करो। हम्म, ओके। इमेजिन तू रोड पर ट्रिप पे जा रहा है और ईच नंबर इज अ सिटीज प्रॉफिट और लॉस। ईच नंबर इज अ सिटीज प्रॉफिट और, ठीक है। इफ यू आर गेनिंग प्रॉफिट सो फार, पॉजिटिव करंट सम, यू कीप गोइंग। बट अगर लॉस हो गया इतना ज्यादा कि फ्यूचर में का कोई भी प्रॉफिट। बक। तो इमेजिन तू रोड ट्रिप पे जा रहा है, ईच नंबर इज फिफ्टी, हाँ ठीक है। बट अगर लॉस हो गया तो भी आगे जाने का कोई, लॉस हो गया ऐसे है, फ्यूचर का कोई भी प्रॉफिट उसको कवर नहीं करेगा। तो जब तक करंट सम अगर जीरो से निकल है, देन बेटर टू स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम द नेक्स्ट सीट। एट एवरी इंडेक्स आई यू डिसाइड। ठीक है, समझ गया, ओके, समझ गया। And now the follow was and the follow was, if you have figured out the big of m solution, try coding another solution using the divide and conquer approach, which is more subtle. If you have figured out the n solution, try coding another solution. Hmm, what does the meaning of divide and conquer? Divide, I do understand. Divide and conquer, which means something like divide the array and try. Oh, okay. So I think I can try doing in the. Hmm, that's a good idea. Divide and conquer. Divide and conquer means, you know, what I'll try is this array has a maximum sub array? Is this the array having a maximum sub array? Or then divide this, right? Something like this, and then. Oh, I think we can definitely try merge sort over here. The time complexity of merge sort is time complexity. I think it will be in log n because we are dividing the array, right? Maybe n log n. Let's see, time complexity of merge sort. I'm just looking the merge sort algorithm because this basically does the exact same thing. I mean, yeah. So the time complexity is going to be
and log n, because we are definitely sorting it. Then here we need not to sort, but instead we need to find the maximum sub. Hmm. Hmm. I think we can do this. Okay. Let me just take a hint from the chat GPT. I'm not taking here. I'm just checking my live stream is if everything is correct or not. If everything is going smoothly or not. Not correct. Just yeah, yeah. It's working. Okay. So everything is working perfectly. So nice idea by the way. Divide and conquer approach. This is more subtle because this is taking still big of n of time complexity, right? And we'll try solving log n, right? Because I have written something over here, the time complexity by the precedence, right? So let me just search over here. Time complexity. Yeah, here it is. So if you see, n log n is oh yeah, 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 because n is already taking n into me. We are just dividing it. Right, and there you're thinking, well, what should be the, I mean, what could be the solution? Dividing merge and sort, because merge sort is basically divide the array and then try sorting, which takes basically n log n, right? And which is basically higher than the big O of n, time complexity, right? Hmm. So okay. So hmm. So guys, do you have any idea how is it even possible? I mean, even if I try to solve this in okay, so where is my video? Yeah. Run conquer. I mean, I do understand that you can, you know, do this in a divide and conquer, but
How? Think a little. I must have a merge shot as well. Merge shot. Merge shot. Hmm. Uh, You are there, right? Till the single, yeah. Because we use basically recursion over here. Yeah. We are just, and then we are merging it, right? And I think here we need not to merge, right? Here we need not to merge it, but what we can do is initially I'm getting the bigger array, right? This one. Hmm. Let's say I'm merging here, but instead of merging, what I'll do is here, I will not merge. Instead, I'll not merge, but instead, I will try doing a submission. I mean, I'll just calculate this sum of both the array, whichever is greater, right? Whoever is greater. I think I can do this. I think I really think that I can try doing this, right? So let's do this now. Hmm. The array dot length is less than equals to
and I really don't need to put this condition. Reason is uh, this itself says that the length is not going to be 90, so I do not need to think about it. So what I'll do is I'll just find the mid. How do we find mid? Math.floor, right? Nums dot length divide by 2. Yeah, I mean divided by 2. And what I'll do, return max sum, right? What I'll try doing is, okay, so first of all I need to pass the array to the merge, right? Let let's say find sum function, and then it is the nums, right? Then what you do is, hmm, recursive way. I know that it will last, we just pass this, you know, left some, find some, left some find करने के लिए, 0 to met, right? Here from met. Let's take the help of this. I am thinking to solve this using divide and conquer function QEM. So I think I can use merge sort. Just answer yes or no.
Yeah, I mean similar because not I did mention the sort, but I know. Yeah. Hmm. Hmm. And here we'll use because right, just yes or no. Yes, the question is used. No, no. Look, so I'll create function. I'll create function. Although I know I already did a mistake, but no worries. I will create a function. Hmm. I know that sorting, not sort. What it does is it goes till the end. Something like this we'll try. And for the first call, I'll take I'll use this return and then nums, right? I know that there are a lot of mistakes. I know that there are there are a lot mistakes. There are a lot of things to cover. I mean, there are a lot of things to cover. But just tell me if I am going in the right direction. Just yes or no. Just yes or no. I know I'm going to no थोड़ा ऑफ है क्योंकि क्रॉस सबेरे वामा रिकर्जन स्ट्रक्चर सही पकड़ा. हाँ ठीक है मतलब ये डायरेक्शन थोड़ा ऑफ है क्योंकि क्रॉस सबेरे सम.
ये क्या बकवास कर रहा है? लेफ्ट एंड राइट सेंटर के थ्रू मिस हो रहा है, मिस हो रहा है। ओके, करेक्ट। बट हाउ इट इज? ये मिड पे जाएगा, ये मुझे यहाँ तक का हल कर देगा, ये लेफ्ट का सॉल्व करेगा, उधर से राइट का सॉल्व करेगा। I think I knew where you're driving to. Didn't understand this. Oh, okay. Okay, so OBS was disconnected. Hmm. OBS was disconnected. Hmm. लगता है तुम्हारा कोड क्या करता है, ये मैं समझ रहा हूँ भाई। लेफ्ट हाफ राइट, लेफ्ट राइट के मैक्स सम को निकालता है, बट ये भूल जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। वो सब एरे जो लेफ्ट के एंड से स्टार्ट, लेफ्ट के एंड से स्टार्ट ओके होता है, और राइट के स्टार्ट में चलता है, में चलता है। crosses the middle, this is called cross sum। track cross middle not needed। although but no worries, but at least we will get uh, a solution, so no worries on that। hmm. Hmm. It says nums 2 minus 1, ओके सो लेफ्ट आ गया 2 माइनस 1, हाँ ठीक है, तो मिड 2 है, 0 1 2, हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब आ गया मैक्स, मैक्स हमें मिल गया 2, राइट मिल गया 5। क्रॉस may be found 1 or 3, so final answer मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आया। मतलब ठीक है ये, पर विदाउट क्रॉस यू मिस बेस्ट पॉसिबल आंसर। अरे नहीं भाई, तू साढ़े बकवास कर रहा है, मेरे को अभी नहीं चाहिए भाई। डोंट वांट आई डोंट वांट any solution for now, but let me just understand this, just understand solution पहले सिर्फ समझना is the best way to master DSA। लेफ्ट हाफ में में ही बेस्ट सवेरे हो, राइट हाफ में ही बेस्ट सवेरे हो, ये क्रॉस करता है या क्रॉस करता है मिडल से। ओके सो क्या बोल रहा है क्रॉस करता है भाई? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। भाई क्रॉस क्या करता है? अब जब पेन पेंसिल बना के देखो क्या?
पेन पेंसिल मार के देखूं क्या रिकर्शन को? बट आई कैन इमेजिन दिस रिकर्शन प्रॉब्लम। ये क्रॉस क्यों करेगा भाई? आई क्यों करेगा भाई? आई मीन if I have, if I have, if I divided the array into two halves, so why do why why this case matters? Don't you think? चैट जीपीटी सेज आई मास्टर भाई अतुल। ये एग्जैक्टली वही सवाल और ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो हर स्मार्ट कोडर पूछता है। मैं स्मार्ट तो बिल्कुल सही सोच रहा है। अगर एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो क्रॉस केस क्यों मैटर करता है? सही बात है। क्रॉस सब एरे की क्या, क्रॉस सब एरे का जरूरत क्यों है? अरे बोल रहा है मिड है। ओ अच्छा 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 अच्छा। अभी आया समझ में। तो देखो जी, मैंने मान लो इसको इसमें डिवाइड कर दिया, तो अब जो भी रिकर्सन कॉल होगा तो ये सिर्फ इसी में देखेगा। ठीक है, और जो भी रिकर्सन कॉल होगा वो इसी में देखेगा। भाई इसका क्या हुआ? हैं? समझा? इस 2 और 3 और 4 5 इसका क्या हुआ? ओ अच्छा, अब समझ में आया। ओ हो आई थिंक अब आया समझ में। समझ में। समझ में। So you are saying, so you are saying because I am dividing into two subarrays, two array on each recursion call, what about the middle one? Right? For example, I think I think I understood this. I mean, understood his point. Divided into two, right? 2 and minus 1, and 4 minus 5, 3. So, so will again divide, and I can see that what about the subarray of 1 4 or 2 1 4 or 1 4 5 and so on. Is it right? Ah, देखा?
तू जो कह रहा है उसको एक लाइन में बोले। जब हम एरे को रिकर्सन से डिवाइड करते हैं तो क्रॉसिंग मिड वाले कंटिन्यूस समझ में आया। समझ में आया। हम्म तो इसमें स्टार्ट और एंड भी इन्वॉल्व होगा। सो तुमने डिवाइड तो कर दिया, पर मिड को दोनों तरफ से हाथ मिला के जो सवेरे बन रहा है उसका क्या है? सही बात है। ओके, सो आई थिंक I'll create, I think I'll call one more, I think I'll create one more recursion, and in that I might pass the I might pass the start, I might pass the goal and start and end of goal left and right surveillance. एक और रिकॉर्डिंग कॉल लिखनी पड़ेगी इसमें। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया लग गया था, क्योंकि इसमें स्टार्ट और एंड भी इन्वॉल्व होने ही वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा। हाँ, स्टार्ट और एंड डाल लेते हैं हम उसमें भी। ठीक है, डाल लेते हैं भाई। Why not just copy? Why not just copy and then just paste? I think I forgot one thing. हाँ, इसमें क्या मतलब है? इसकी जीरो। अच्छा 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 अच्छा। Oh yes, yes, this is definitely requirement, then it will, else it will run, infinitely. So, hmm. I'll just name this me.
जब तू एरे को स्लाइस करता है, तू नया एरे बना रहा है जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। अच्छा। एरे इंडेक्स लूज कर रहा है। मिड का ओरिजिनल, यार क्या कि मेरा फ़ोन थोड़ा गर्म हो सकता है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ रख देना चाहिए, यहाँ पे रख देना चाहिए, राइट। आ रही ना कि नहीं आ रही भाई? ना आ रही थी, ना आ रही भाई, और तो ना आ रही। कोई बोल लो झगड़ा रख दे में उसमें की है। एक्चुअली आई एम यूजिंग माई फोन एज अ कैमरा, सो यस, आई थिंक it is working and it should be working. Let me like. नया एरे बना रहा है। ठीक है, अब तक हमने क्या कर लिया इसको? ये बेस केस है। हाँ मतलब ठीक है, एंड भी कर ले, क्या दिक्कत है? नाउ आई नीड टू राइट। तो मिड के क्या है? क्या खाना भाई, उसमें कहाँ चला गया? पागल ही है क्या? साला ओबीएस डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट आई थिंक समथिंग इज, बट आई think write the logic to calculate the sum. Let me do this. I am not getting.
ये तो मुझे पता है, मतलब सम कैसे कमाना है। पहले पहले ये जाएगा फाइंड सम। ठीक है। Complete this code, man. I'm stuck here. I don't know how to complete this code. Oh, भाई 90% already. Wow. But left का कहाँ है? Something is interesting. You need to understand. I don't know. I mean, I know. मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था यार, कैसे मतलब यू आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस सम लेफ्ट सम नीदर द राइट सम, हाउ द हेल यू आर make sure okay okay something I need to add something over here as well. Just to find some I need to pass. Oh yeah. Oh, yeah. I so test case is accepted. I think I need a dry run. It's an interesting solution. Instructions interesting. It is an interesting solution. And when the time and SC is okay, before understanding the time and SC, let's do a dry run. Can you just do deep dry run so that I so that I could be able to you know I could be able to imagine the recursion call evaluatively. ठीक है जी।
हाई लेवल पे हमने क्या पास किया, क्या पास किया? हाँ, 0 1 2 3 4, तो हमने 4 लेंथ पास कर दी, स्टार्टिंग कर दिया 0 से। बगल में कोड ही लगा लेते हैं भाई। हाँ ठीक है जी। नारे 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 नारे, understand that the stream was viewed while it was live. Hmm. Nare 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 nare, सटिकल जाओगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, गंदे नाले संदे नाले। ठीक है जी, हमने पास किया। एरे हमें देना ही है, और स्टार्टिंग कहाँ से होगा एंडिंग कहाँ से होगा वो हमने, इनिशियली तो हम पूरा एरे ही देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं। लेट्स दिस विल कीप डाइविंग द एरे टिल 1 माइनस एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये क्या बदतमीजी है, टिल 1 माइनस। At every merge calculation, max left, max right, and max crossing. See, I'm confused over here only, right? You're not pausing, you're not calculating the left sum. I don't know exactly. But yeah, I think let's do this. Hmm. ऐस करोगे वो साढ़े नारे। ओके, तो पहला कॉल बोल रहा है 0 से 4 तक जाएगा। अच्छा जी, लेफ्ट वाला, हाँ ठीक है। और ये तब तक नहीं जाएगा तब तक ये रिटर्न नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। 0 से 4 तक जाएगा। फिर मिड कैलकुलेट हुआ। मतलब ठीक है, ये हुआ है, ओके ठीक है। हम 0 से 2 इसी में, इसी के अंदर हमें भी, ठीक है। हम अभी इसी के अंदर ही है, 0 2, जब तक ये नहीं हो जाता स्टार्ट और एंड इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। 0 से 2 आ गया। अब 0 से 2 करेंगे डिवाइड, तो हमें मिल गया मिड। क्या मिल गया, 2 1 जा 2, विच मीन्स द मिड इज 1। भाई तो हमने वापस से इसको कॉल किया, तो ये रहा वो। ठीक बात है, ठीक बात है ना। हम ऐसे ही कर रहे थे, इसकी वजह से ये बना, और फिर हमने इस लेफ्ट को कॉल कर दिया, ये रहा। फिर हमने इसको कॉल किया तो ये बना, तो हमने इसको फिर से कॉल कर दिया। अब आप देखेंगे, तो लेफ्ट भी हो गया 0, राइट भी हो गया 0। ठीक है, तो ये कॉल नहीं होगा, ना ना ना, ये कॉल होगा ही नहीं। ये कॉल होगा नहीं, नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ये कॉल हुआ, ये कॉल गया, मिड 0 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो स्टार्ट और एंड इस पे कॉल हुआ था। ठीक है, 0 और 1। ठीक है जी, 0 और 1। वेट वेट वेट, ये थोड़ा तकलीफ होती है इस साले को समझने में। बट वंस वी अंडरस्टूड, बट वंस वी अंडरस्टूड, वी विल बी एबल टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके सो हमने देखा। ओके सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। फाइंड सम, मिड निकाला, स्टार्ट अभी 0 है, एंड क्या हो गया,
mid. It means okay. Now 0 to 2 गया, फिर कॉल हुआ, इसका 2 निकाला, 1 हुआ मिड, 0 1 के लिए कॉल हुआ, 0 1 के लिए कॉल हुआ, ठीक है। 0 और 1 से मिड 0 और 1 से 0 प्लस 1 किया यहाँ पे, मिड निकाला। तो किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो छोटी वैल्यू है, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट itself is a 0, and because we are using floor, so mid start also becomes 0, so it will call for this also, it will call for this, right? And because we it will call for this, right, तो अभी जाएगा स्टार्ट पे, यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये रिटर्न होगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, क्या रिटर्न, स्टार्ट। स्टार्ट क्या है, एरे हमारा क्या था, एरे हमारा था ये, तो 0 पे क्या है 2, तो इसने एरे पे क्या रिटर्न कर दिया, लेफ्ट में आ गया 2, ठीक है जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम आ जाते हैं राइट पे। तो राइट ने इसने क्या भेजा देखना, राइट ने क्या भेजा इसमें 0.34, तो हम 34 वाला देखते हैं कॉल, ये रहा, ठीक है जी। 2201 हो गया, यहाँ से करता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये 22 क्या है भाई, यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, भूल गया था मैं, सॉरी भाई, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे आ गया 22 वाला, कहाँ है मैं, ये यहाँ से रिटर्न हुआ, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है मैं मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा इसको, एक सेकंड, इसको थोड़ा बगल में रखते हैं क्योंकि अभी इसका काम है नहीं, कीबोर्ड को, ठीक है जी। हम्म अब ये कह रहा है कि फाइनल कॉल जो हुआ था 0 0 पे हुआ था, ठीक है, 0 0 पे हुआ था, तो ये नीचे नहीं गया ना, ये नीचे गया ही नहीं है, यहाँ पे ये बेशक यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई, अब ये सारा साथ साथ क्यों नहीं चलते यार, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, नहीं नहीं, ये साथ साथ चल ही नहीं सकते, साथ साथ चलते हैं क्या, नहीं भाई ये हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता कि भाई ये साथ साथ चले, साथ साथ नहीं चल सकते ये, आई गारंटी। little confused bro, does both recursion call, does all, not both, does all, see, even if it is working, I mean even if it is calling simultaneously all recursion call, JavaScript is not, I mean it will not allow, according to me, because if it again it will call this, call this, call this, call this, call this, it will return, from this, right? Because 0 has, okay, think I am, let's ask people, just happen simultaneously, simultaneously, I'm not spelling it.
Nothing, yeah. Forget about this penny. I think the answer is going to be भाई तो बहुत ही ज़्यादा गलत सवाल है. Let's no. I know this. बट यहाँ पे हम देखें तो ये तो भाई ऐसे ही बोल रहा है भाई 0 0 के लिए 2 रिटर्न हो गया तो तुम भी भैंस की डांट पड़ दो पॉइंट्स में. मिड एंड गया. Mid plus 1, mid was 0 here, right? So it says that mid plus 1 which becomes 1. What is end then? End is, oh, this is it. End is looking huge. So, let me just write the array of it. 2 minus 1 array data. Yeah, I need to understand this. I think I need a little rest. Okay, so I think ये कह रहा है कि भाई आपने 0 0 कॉल के लिया बेस केस हो गया रिटर्न कर दो यहाँ से. ठीक है यहाँ से क्या हो गया रिटर्न हो गया. ठीक है अब इसने यहाँ से रिटर्न किया अरे क्या दिया 2 दे दिया इसने. अब तो बेस के सेट हुआ है. ठीक है इसका भी बेस के इसका भी 8 हुआ है तो 0 एंड एंड क्या था 1 था ना. क्या था एंड मिड क्या था यहाँ पे 0 था. नो 0 नहीं था ना भाई. 0 कैसे हो जाएगा. रिकर्सन. अच्छा तो ये कह रहा है आपने इसको कॉल किया दिखाया नहीं पर. ठीक है यहाँ से रिटर्न हुआ
इमेजिन इमेजिन ब्रो इमेजिन। एंड का समझ नहीं आ रहा भाई। एंड का नहीं आ रहा है समझ में कि भाई ये वन वन कैसे हुआ। चलो उसका ठीक है, मिड का समझ में आ रहा है क्योंकि भाई मिड वहाँ पे जो आखिरी जो यहाँ पे पास हुआ था वो जीरो हुआ था। ओके ओके ओके, जो जीरो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। Parameters passed. I don't understand how the parameter is passed here. Let's have a little drink of it. Hmm. छह किसने देख लिया भाई? और कब देख ली छह? और भाई वो क्या हाल है? सब ठीक ठाक? It says two people is watching. Can you just confirm if we are two? Oh, I'm happy that two people is watching. Okay, so you guys just you guys can just help me in understanding this recursion code, right? If you are a coder. Hmm. हाँ जी, दो बज गया। Anyone is there? Hello? How do I know? Oh, there were two, now there are three. There were two, now there are three. समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या दिक्कत है इसमें? इतने बजाऊंगा था रहा है। सारा यहाँ क्यों नहीं लगता? चलो कोई नहीं। नाउ साला यहाँ क्यों नहीं दिख रहा मुझे? Two people is watching. Can you guys just do a chat so that I confirm? No, I think there is a problem with the studio. No problem. Let's back to the work. भाई मुझे नम सहरे के स्टार्ट से लेके एंड तक का मैक्सिमम सब बहरे तुम बता दो। अच्छा, वी कॉल व्हाट वी पास्ट स्टार्ट इवेंट। ओह अच्छा अच्छा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओह
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है जी, 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 ठीक है जी। तो मेरा स्ट्रीम तो नहीं खुला होगा कहीं और पे। पता चले बवाल हो गया। ठीक है। हम्म। because we have passed the end and returning from there, right? And here at the last it was one. No, yes or no? Yes or no? अरे वो भी समझ नहीं आया। ये भाई जीरो है। ठीक है, मैं समझ गया। ये मिड, ये वाला मिड ले रहा है क्या? समझ नहीं। यहाँ से ठीक है भाई, यहाँ से मुझे समझ में आ गया भाई। ये -2 इसने रिटर्न कर दिया, नॉट -2 एक्चुअली 2। टिल देन, टिल देन स्टार्ट क्या था? स्टार्ट था 0 एंड मिड भी 0। क्योंकि ये यहीं से रिटर्न हो गया, राइट? रिटर्न हो गया ना यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 0 कहाँ गया भाई? नो, 0 0 कहाँ गया? 0 0 के लिए पर दिख था 0 2 0 1 एंड देन 0 0। ठीक है, इसके लिए कॉल किया हमने। क्योंकि यहाँ से रिटर्न हो गया, जैसे ही रिटर्न हुआ, रिटर्न हो। हम्म। तो प्रीवियस अगर हम देखें, तो जो प्रीवियस कॉल था वो था 0 1। ठीक है, तो स्टार्ट क्या था? 0। मिड क्या था? 1। तो अगर इस हिसाब से देखें, नहीं यार, 0 4, मिड +1 4। ठीक है। 0 2, मिड निकाला और एंड गया है। एंड गया है ओ। एंड कॉल करती है चू चू का भी, चू चू। कहाँ से आ रहा है यार? what is not changing? थोड़ा तकलीफ तो है। भाई मेरे को रिकर्जन कॉल नहीं आ रहा समझ में। कैसे हो रहा है? अगर सिर्फ
अगर पहले अगर पहले लेफ्ट सम की कॉल हो रही है तो उसी को होने दे। Then let me understand. भाई तू एक भैंस तू साला तारीफ करता रहता है साला। भाई तू उस लेवल पे है जहाँ रिकर्जन ट्रूली अनलॉक होता है, पागल आदमी। तेरा लॉजिक सही है, तू कह रहा है कि जब लेफ्ट सम का रिकर्जन हुआ तो उससे रिकर्जन पे ध्यान दे जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और चल फिर हम सिर्फ लेफ्ट रिकर्जन। ठीक, हाँ मतलब ठीक है, जीरो पे कॉल हुआ, इसको कॉल किया, इस पे जीरो कॉल किया, ये सब ये बेस के, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा, हाँ रिटर्न करेगा। अब ये इस पे आ गया, किस पे, इस वाले पे, इस वाले पे आया, इस वाले पे आया तो क्योंकि ये ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, तो मुझे लगता है इसके अंदर फिर जाएगा, इसका बेस कुछ था नहीं, ये नहीं। अब वन लेवल अप चलते हैं, ठीक है, एक लेवल आगे। लेफ्ट रिकर्सन 0 0, तो रिटर्न ट्रू कर दे। अब राइट रिकर्सन चालू हुआ, हाँ ठीक है समझ गया। यहाँ सब क्या होगा, राइट रिकर्सन चालू। हाँ, अब ये बेस केस ये कहाँ से आया। If you see, I was passing start, right, and mid, right. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आया समझ, अब आया समझ में। क्योंकि जीरो जीरो, सॉरी, जीरो कहाँ गया, 0 1 ने इसको कॉल किया, यहाँ से रिटर्न हो गया 2, ठीक है। हम इस पे वापस जाएंगे, ठीक है, इस वाले कॉल पे हम वापस जाएंगे, तो हम जब इस वाले कॉल पर गए, क्योंकि 0 0 ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, ठीक है, तो 0 0 नहीं जाएगा, जबकि ये जाएगा राइट वाले पे। तो राइट क्या है, 0 + 1 क्या करेंगे, मिड करेंगे, तो जीरो आ जाएगा मिड, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मिड +1 विच मीन्स 1, एंड तो हमारे पास मिड है ही, राइट, दिस वन है ही। तो हम इसको कॉल करेंगे, अच्छा जी ठीक है जी। तो हम इसको कॉल करेंगे ना, तो हमारे पास क्या कॉल होगा, वन, वन ऑफ वन, वन ऑफ वन कॉल हुआ। अभी वन ऑफ वन कॉल हो गया, अभी रिकर्सन वापस से वो हो गया, ठीक है, बेस केस हो गया। तो 1 1 0, अब क्या रिटर्न हो गया यहाँ से, क्या ये -1 रिटर्न हो गया यहाँ से, ठीक है जी। -1 यहाँ से भी रिटर्न हो गया, तो अब हम किस पे जाएंगे, लेवल दूसरे पे जाएंगे, 0 1 होगा, अभी इस पे जाएंगे, 0 2 पे जाएंगे, देखेंगे सही हो कि नहीं है। ये रिटर्न हो गया, अब हम जीरो, नाउ इन वी हैव, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, इस पे नहीं जाएंगे, पहले ये भी तो है, पागल आदमी, ये भी तो है, ठीक है जी। नम से स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था,
राइट का बेस्ट बेस केस आ गया। 1-1 था। अभी हम लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, राइट नहीं हम सॉल्व कर रहे भाई। लेफ्ट के अंदर ये भी 3 कॉलम है ना, हाँ ठीक है। लेफ्ट सम है, लेफ्ट सम है, लेफ्ट 0-1 में, सॉरी हो गया। 0-1 में इसने रिटर्न किया, अभी हम 0-1 पे ही है, ठीक है। 0-1 का राइट सॉल्व हो गया। अब हम 0-1 पे यार इसको कॉल करेंगे, किसको, क्रॉस वाले को। तो 0-1 पे स्टार्ट क्या है, स्टार्ट क्या है यहाँ पे 0, और मिड क्या है भाई, मिड भी होगा 0, 0+1, तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है। और एंड हमारे पास क्या है भाई, है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एंड, एंड हमारा होगा, एंड क्या है, जी अच्छा ये एंड, हाँ हाँ डिचक डिचक है, कोई नहीं, तो डिचक डिचक है इस क्वेश्चन में, बट ठीक है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इमेजिन सॉल्व होगा। हम्म, আমি যে তোমার जो শুধু যে তোমার শুনে, আমি যে তোমার चाहते तेरा अंदाज़ दिल को। ठीक है जी, वो आ जाते हैं। और स्टार्ट 0-0-1 था ना, स्टार्ट 0, मिड इज एंड, मिड ऑल्सो 0, repeated and was take the end from where from where. Hmm. From 1 which is coming from here, right? तेरी चाहते मेरा अंदाज दिल को निभाया है बरसों से। थोड़ा दिल दे दो भाई, दिल दे दिया क्या फायदा, दिल दे दो थोड़ा, अच्छा लग रहा है दिल दो, इतना बढ़िया लग रहा है। बोले भाई मजा आ गया भाई, क्या काम कर रहे हो, और इमेजिनिंग समथिंग यू लिसन। ओके, इंग्लिश भी जाते हैं भाई। क्या है, नम नम कौन सा होगा, ये है नम, मुझे लगता है क्योंकि हमने ये वाला यूज किया ना, तो हमारे पास एक ही नम होगा, वो है ये थोड़ा इशू है। लगता है अभी पूरा ही नम जाएगा, मुझे ऐसा लगता है पूरा ही नम जाने वाला है, ठीक। I don't know, let's understand ना, अगर ये पूरा नम जाएगा, पूरा जाएगा, मुझे लगता है पूरा जाएगा। हाँ पूरा ही जाएगा ना भाई, तभी तो साला ये करेगा अपना, पूरा नहीं जाएगा हाँ? अरे मतलब पूरा नहीं जाएगा मतलब ये, अरे पूरा गया, इसने कैलकुलेट किया मिड, मिड है 0, this is going to take a lot of time. Hmm.
Can you just no जो भी should the one thing I cannot pass this so we are passing हाँ भाई ना तो पूरी बात की कुछ इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं इसमें भी तो वही कर रहे हैं ठीक है तो कह रहे कि भाई मिड है ज़ीरो भी ज़ीरो मैंने सो गया तो ठीक है तो ज़ीरो क्यों जाएगा मिड इसने टू कर दी इसने लेफ्ट सम बड़ा है सम बड़ा है और लेफ्ट सम बड़ा लेफ्ट सम आगे टू राइट सम आगे तेरह राइट सम कह रहा है मिड प्लस वन से शुरू हो जाओ मिड प्लस वन तो इस केस में तो मिड प्लस भाई मतलब वेरी ऐसा है वन से शुरू होगा ना यार यार इसमें लिख देता हूँ इसने बोला आप जीरो से वन तक जाओगे तो जीरो वन अच्छा मिड भी जीरो है मतलब नहीं यहाँ तो जीरो ही है मतलब कह रहे कि मिड प्लस वन से जाओगे यानी कि आप बोलोगे वन से जाओगे ठीक है वन तक जाओगे एंड तक एंड क्या एंड वन ये माइनस वन प्लस क्या कितना है कितना है इसने दिया वन दे दिया तो इसने दिया होगा ठीक है तो लेफ्ट से मिल गया टू राइट से मिल गया माइनस वन तो इससे मिल गया वन ठीक है ठीक है जब इसने क्या कर दिया क्या कर लेते हैं जीरो वन नाउ नाउ लेट्स मूव एक तो यार लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टू नेक्स्ट भाई यार एक तो छोटा हो जाता ये काम ही नहीं करता ठीक है अभी हम आ जाते हैं
was Atul ready to roll? तो क्या है बस। अरे नहीं भाई, इसी को कंटिन्यू करना है। ये आ गया, ये हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, हमें मतलब गया यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब पागल आदमी, यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल अप का क्या हुआ? लेवल अप का क्या हुआ माय फ्रेंड? कंट्रोल एंटर भी नहीं हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कंट्रोल मैं हटा ही रखा है सारा ने। भाई तो ये है रिकर्जन का रियल चार्म। तब हम जाएंगे, किसने मांगा था ये रिटर्न? मांगा था 012 ने, ठीक है। तो 012 ने मांगा था, तो हम 012 के लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में, लेफ्ट से तो आ गया ना, हाँ लेफ्ट से मांगा, तो हम राइट में जाएंगे। अब होना बाकी है राइट, ठीक है। 0,2 का, ठीक है जी। 0,2 का राइट, ठीक है। 0,2, ठीक है। 0 + 2 हो गया 2, 1। तो मिड आ गया 1, तो मिड आ गया 1 + 1, और एंड है हमारा क्या? एंड क्या हमारा 2। तो ये भी 2/2 हो गया, तो ये भी क्वेश्चन कॉल हो गया। 2/2 स्टार्ट हो गया 2। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया इस पर? 0,1,2, इसमें हमने रिटर्न किया 4, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम आया था, कितना आया था मैक्सिमम? हाँ मतलब 2 ही था, क्योंकि इसमें मैक्स कौन सा है? 2 है, तो 2 आ गया यहाँ से भी, ठीक है। 2 आ गया। हम करते हैं राइट सम कंप्लीट हो गया, इसने भी हमें दे दिया 4। 2 दे दिया 4 इसने दिया, ठीक है जी। इसमें जाइए, पूरा एरर आ गया। स्टार्ट करा, स्टार्ट क्या है? है 1। मैं इसको एक स्टार्ट पता नहीं छोड़ा। ये देखो एंड तो होगा 0,22 होगा, ठीक है। स्टार्ट भी 0 होगा, 0 होगा स्टार्ट भी। मिड होगा, वरना यस यस ये कर भी दूँ, ठीक है। तो 0, 1 और 2, ठीक है। 0, 1, 2। अभी कह रहा है कि मिड से चलाओ, मिड से चलाओ। 0, 1, 2, 0, 1, ये कह रहा है यहाँ से चलाओ, उधर से, यहाँ से चलेगा स्टार्ट तक, ठीक है। 0 तक समय समझोगा। ये पीछे जा रही क्या? ये क्या बात है, पीछे भी जाना है। मिड हो गया 1, 0, 1 से शुरू किया हमने, आई जब तक जाए अब तक 0 ना हो जाए, तो माइनस किया, तो ये लिया, ये लिया, दोनों प्रेस कर दिया, तो फिर से माइनस बना गया, फिर से बना गया साला। अब हम क्या करें? मिड +1, मिड +1 यानी कि 0, 1, 2, ठीक है। 2, 2 से एन तक जाएगा, 2 से 2 तक जाएगा। अच्छा ओके ओके। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि भाई ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मिड +1 से एन तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा, 2 से शुरू और 2 से ही जाएगा, ठीक है। तो भाई ये 4 आ गया, 4 1 क्या आ गया, 5 हो गया भाई। ये तो इसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे
5 0 है। Start 0 So I think this question will take time. जाने दे जाने दे. Okay, so doing recursion was a good idea, but it will take time. Taking time means I will be requiring a notebook and pen, then only I can track it, because imagining recursion call quite difficult. But yeah, that's okay. And stream